How much principal amount repaid? Okay. Today we understand the working of this. It's a very important working you have to do in each question to segregate the amount of lease rent between two parts. One is interest and one is the amount. Basically this working is why we are segregating amount of lease rent into interest and principal repayment. Principal amount repaid. Year 1, 14,85,590 is the liability recognized by the lessee. Okay. This is recorded at 0 year. 0 year means here we write 0 year means this means is the beginning of the first year. Beginning of 1 year, first year, year 1. Year 1 का जो beginning है, this is known as basically 0 year. There will be no interest or minimally because the installment is payable at the end of the year. The lease rent is payable at the end of each year. Okay, so interest will be calculated at the end of each year. Now, interest, how we calculate the first installment interest? This is the lease liability. This means that much amount you have taken as a loan from the lessor. This is the treated as loan. 14,85,590 is the loan amount. When you are paying first installment, first lease rent at the end of the first year, you are paying also interest on this amount. The interest of first installment will be 14,85,590 multiplied by 14.97%. Okay, now how much is 14,85,590 multiplied by 14.97%? Interest will be 2,22,393. The first year interest is 2,22,393 and the amount of lease rent paid on first year at the end of the first year is 5 lakh. Out of this 5 lakh, 2,22,393 is interest. Then how much is the principal amount paid? This means we have to deduct it. 5 lakh minus 2,22,393. You will get the amount of principal paid during the first installment. At the time of paying the first lease rent, total amount paid 5 lakh, in which 2,22,000 is the 393 is the interest. The remaining will related to principal. 5 lakh minus 222,393. This will 2,77,607. Okay. In first year, you have paid, lessee is paid 5 lakh, in which 2,22,393 is the interest, and the amount repaid as a loan is 2,77,607. Now, at the end of the first year, after payment of this much principal amount,
How much is the remaining amount? The remaining amount is, you have to find like this. Opening is 14,85,000. Sorry. Opening is 14,85,590 minus less. This much is paid. 2,77,607. You will get the opening amount. After payment, 14,85,590 minus 2,77,607. You will get the amount remaining 12,07,983. This is the remaining amount at the end of first year. Your liability reduced by this much, this amount, the amount the lessee paid as a principal repayment. This will reduce your liability. Now come to the second year. Second year, there is also 5 lakh minimum lease payment. We are paying every year 5 lakh lessee. Amount due at the end of second year. Interest will be paid on this much at the end of the second year. 12,17,983 multiplied by 14.97%. The interest is 1,80,835. This is the amount of interest which is included in 5 lakh. So 5 lakh minus, you will get the principal amount paid. 5 lakh minus 1,80,835. Three lakh 19,165. This is the amount repaid at the time of second year installment. Now, how much is the remaining amount after payment of this much? You will find like this: 12,07,983 minus 319,615. You will get the amount remaining. $8,88,368. 8,88,368. So it is 319,165. Oh, sorry. Oh. 165. 1027,983 minus 319,165. 88,888. Then it will be 88,48,18. Okay. Now this is the remaining amount after payment of the second lease rent, second year lease rent. Remaining loan amount is this much. Now come to the third year. Same you have to work out for the all remaining year. 5 lakh is the lease payment. The amount due at the second year is this much. This interest on this amount will be paid at the end of the third year. $1,33,056.
This is the amount of interest which is included in this 5 lakh. Now you deduct 5 lakh minus 1,33,506. So 5 lakh minus 1,33,056. 3,66,944 is the amount of repayment. How we will get? 5 lakh is the lease rent minus interest, 1,33,056. You will get the amount of repayment. Okay. Now how much is the amount due? Out of 8,88,818 minus 3,66,944. Balance amount due 5,21,874. This is the amount due at the end of the 3rd year. Now 4th year. Fourth year. Now in 4th year, the lessee will pay 5 lakh plus 1 lakh guaranteed residual value, 6 lakh. In the question there is given the guaranteed residual value, 1 lakh. The lessee will pay 5 lakh plus 1 lakh. 6 lakh is the minimum lease payment at because 4th year is the last year. So lessee will pay minimum lease rent plus guaranteed residual value. Okay. Now you have to take care in the last year. Here we don't find the interest by using the interest rate. What is the amount due? Amount due is this much. How much I am paying? 6 lakhs. Amount due and 6 lakhs. Difference between these two is known as interest. In the last year, always you find the interest like this. 6 lakh minus 6 lakhs is the amount paid. And the amount due is 5,21,874. You will get the interest. Six lakh minus 5,21,874. 78,126 is the amount of interest. Okay. Here we are paying 6 lakh. Out of this 78,126 is the interest. So 5,21,874 is the amount paid for principal repayment. Amount due is 5,21,000. Out of this much is paid. This means 5,21,874 minus 521,874. The amount due becomes nil at the end of the 4th year. क्लियर? किसी को दिक्कत? वर्किंग समझना इसका जरूरी है. ये वर्किंग आपको हर क्वेश्चन में करना होगा जब भी लीज रेंट का क्वेश्चन आएगा. अगर आपको लेजर या जर्नल एंट्री कुछ भी बोल दिया बनाने, ये दोनों वर्किंग करना पड़ेगा, तभी आगे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. या अगर नहीं भी आपसे लेजर या जर्नल पूछा है, केवल पूछ दिया फाइनेंस चार्ज कितना, हाउ मच इज द फाइनेंस चार्ज, तो इंटरेस्ट का वर्किंग आपको करना ही पड़ेगा. तो ये दो वर्किंग आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है इन लीज अकाउंटिंग के टॉपिक में. फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड
the value recorded as lease assets and lease liability. After this working is required. Calculation of interest is very important. Okay, this working is also show you how much you are paying for principal repayment in every year. कोई दिक्कत किसी को वर्किंग में? हाँ सर। हाँ शिवानी, समझ में आया वर्किंग? यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन, कुछ नया नहीं, खाली वैल्यू चेंज होगा बस। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन। अभी जनरल एंट्री हम नहीं बता रहे हैं, पहले वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग समझना इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही लेजर में। वर्किंग समझ में आएगा, सब बन जाएगा। लीज टर्म 5 ईयर, लीज रेंटल पर एनम 5 लाख, guaranteed residual value, guaranteed residual value 1 lakh, expected residual value, expected means this is total residual value 2 lakh, और IRR internal rate of return, this is also known as implicit rate, internal rate of return, interest rate is given 15%। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिखेगा दिखेगा, नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट रुको ना, उस दिन भी तुम्हारे साथ हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी कभी। स्क्रीन अगर मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो कहीं नहीं जाएगा स्क्रीन। अगर एक जगह जा रहा है दूसरी जगह नहीं जा रहा है, इसका मतलब नेटवर्क इशू है। आया स्क्रीन? आ गया सर। तब बढ़ा जाती है तुम। चलो, this is the question. Same working we have to find in the books of Lacey. Amount recorded as assets, assets के रूप में क्या वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? दूसरा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट पेड, सॉरी, इंटरेस्ट पेएबल एवरी ईयर, ये हमको निकालना है। ओके, सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग करेंगे। फर्स्ट वर्किंग इज टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट। 5 ईयर है, टर्म है यहाँ पर हमारे पास। आइए फर्स्ट वर्किंग हम लोग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
MLP, minimum lease payment. Year first column, next column MLP, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पर हम लेंगे 15% से, क्योंकि हमारा 15% दिया है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। आप फैक्टर निकालो जल्दी से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए एट द रेट ऑफ 15%। आपको 5 साल का निकालना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जल्दी से कैलकुलेटर से निकालो। कैलकुलेट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से आपको निकालना पड़ेगा। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था 15% का मतलब ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस तरह से निकलेगा 1 अपॉन प्लस 1 प्लस 15% मीन्स 1.15 टू द पावर n। n आपका चेंज होते जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर में आपको निकालना है एकदम सिंपल। आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 1.15 से। एक बार वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर में पहले, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। $1.15। इक्वल टू प्रेस किए तो फर्स्ट ईयर का आ गया 0.869, 0.869 आ गया। 4 डेसिमल लेंगे तो 0.8696। सेकेंड ईयर का फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0.7561। फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो थर्ड ईयर का आएगा 0.6575। फिर एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो फोर्थ ईयर का 0.5717 या 18 आप कर सकते हो इसको लास्ट वाला में। और लास्ट ईयर का आपका एक बार और इक्वल टू प्रेस करो 4972। 57। ओके, दीज आर द फैक्टर यू हैव टू वर्क आउट। आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ये दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। अब आ जाइए, फैक्टर निकल गया, हम लोग यहाँ पर सारा वैल्यू लिख देते हैं। MLP हमारा 5 लाख है एवरी ईयर का। लास्ट ईयर में केवल वो गारंटेड रिसिडुअल वैल्यू भी पे करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेसी जो है लास्ट ईयर में गारंटेड रिसिडुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, गारंटेड रिसिडुअल वैल्यू इज 1 लाख। इन द लास्ट ईयर यानी 5th ईयर लेसी विल पे 6 लाख रुपीज। फैक्टर जो फाइंड आउट किया वो यहाँ लिख दिया 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, 0.4972. Okay, now multiply this to get the present value. 5 lakh multiplied by 0.8696, 4,34,800. Next one is 3,78,050. Next one is 3,28,750. Next one is 2,85,900. And the last year is 2,98,320. Okay. Any problem? Now get this total. Total is 17,25,820. This is present value of MLP.
No. How much is the fair value is 20 lakh. Fair value of machine is 20 lakh. Which value is minimum? Obviously present value. दोनों में lower value is 17,25,820. This will be recorded as lease assets. Lease assets recognized as rupees 17,25,820 रुपया. ओके, तो ये वैल्यू आपका लीज एसेट्स और लीज लाइबिलिटी दोनों इसी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा. बोथ लीज एसेट्स और यहाँ ऑब्लिक देके आप लीज लाइबिलिटी लिख सकते हो. 17,25,820. ओके, नो, यहाँ तक हो गया, लिख लिए. क्लियर. चलो नेक्स्ट वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ईयर, लीज लाइबिलिटी, MLP, इंटरेस्ट. यहाँ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 15%, 15%. एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल अमाउंट repaid. फॉर्मेट बना लेंगे. इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में वर्किंग करना है. ईयर 1, सॉरी 0 ईयर. आपको ऑलवेज 0 ईयर से स्टार्ट करना है. फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम कुछ भी नहीं पे कर रहे हैं. वी आर पेइंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वी कंसिडर एज अ 0 ईयर. द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड एट 17,25,820. ओके, in this date there is no interest, there is no repayment of principal, and there is no lease rent payable. Now end of the first year. Okay, end of the first year. First year के end में I have paid 5 lakh as a lease rent. Now how much is interest included in this? We have to calculate the interest in this amount, lease liability. 17,25,820 multiplied by 15%. You will get the amount of interest.
258873 is the amount of interest. Out of this 5 lakh, 2,58,873 is the amount of interest. So how much is the principal repayment? 5 lakh minus the amount 2,41,127. हाँ बोलो. हेलो, क्या तुम ज्वाइन नहीं किया क्लास? अरे देखो, बोले ना कल मैच देख रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सुबह लेंगे. चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर दिए, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लेना. 11 बजे आ जाना, 11:15 में. चलो, 5,02,58,873 and this is the amount of principal repayment. Now, how much is the remaining after payment of first year repayment? I have paid this much for the loan, lease liability. How much is remaining? 17,25,820 minus 2,41,127. Find out the remaining amount. $14,84,693 is the remaining amount at the end of the first year. Now in second year, 5 lakh is the minimum lease payment. Find out the interest on this amount because this is due on the first year. 14,84,693 multiplied by 15%. Interest is 2,22,704. Now 5 lakh minus this one. Out of 5 lakh, 2,22,704 is the amount of interest. The amount of principal repayment is, you will get this way, 2,77,296. Okay. This much is due end of the first year, and end of the second year I have paid this much of amount. The amount due at the end of the second year is how much? Minus 277,296. This will 12,07,397. Okay, now come to the third year. Third year. 5 lakh is the principal repayment. 5 lakh is the lease rent, sorry.
Calculate the amount of interest on this amount. 12,07,397 multiplied by 15%. $12,07,397 का 15% आप निकाल लो, कितना आएगा? 12,07,397 multiplied by 15%. Interest is 1,81,110. Now find out the amount of principal paid. 5 lakh minus the interest amount. 110. 5 lakh minus 1,81,110. 3,18,890 is the amount of principal paid. Now again find out the due amount end of the third year. Minus 318,890. Okay. Now fourth year. Fourth year minimum lease payment is 5 lakh. Find out the interest. 8,88,507 multiplied by 15%. Interest is 1,33,236 76. 276. The amount of principal repayment is 5 lakh minus 1,33,276. $3,66,724. Now amount due 8,88,507 minus 3,66,724. Balance amount is 5,21,783. Fifth year. Again in the last year, as I told in the previous example, in the last year you don't have to find by using the interest rate. This will find by deducting the two amount, because if you are using the interest rate you will create some difference in amount. To avoid this difference we are using this way to calculate the interest. This is the amount due and this is the amount paid. The difference between this is will be taken as interest. Okay, you will get the interest 78,217, and the amount paid for principal repayment is 5,21,783, and the after payment of all the installment amount is nil, lease liability.
The working is completed. Okay. Any doubt? समझ में आया शिवानी? Yes, sir. तो हर क्वेश्चन में लीज रेंट में अगर आपको लीज लायबिलिटी कितने से रिकॉग्नाइज होगा वो पूछ रहा है तो उसके लिए तो पहला वर्किंग किए। अगर आपसे पूछेगा कि नहीं इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, या फिर बोल दिया कि जनरल एंट्री और लेजर बनाओ, तो ये दोनों वर्किंग करना होगा। आफ्टर दैट यू आर रेडी टू प्रिपेयर द जनरल एंट्री और लेजर। क्लियर? चलो अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो क्वेश्चन ऊपर लिखे थे उसमें एक चीज लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा कि यहां पर डिप्रिसिएशन चार्ज, अच्छा नहीं डिप्रिसिएशन का जरूरत नहीं है, सॉरी नहीं लिखने का जरूरत है, मत लिखना, लिखने का जरूरत नहीं है डिप्रिसिएशन हमको, क्योंकि हम लोग तो लेसी का बुक का बना रहे हैं ना। डिप्रिसिएशन अच्छा नहीं लिखना ही पड़ेगा, ओहो बार बार भूल जाते हैं, लिखना पड़ेगा, सॉरी। डिप्रिसिएशन चार्ज एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। ओके चलो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा मतलब वर्किंग तो हो गया, अब जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। आफ्टर दैट लेजर, थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि सारा वर्किंग हमें, वर्किंग समझ में आ गया, अब इसका लेजर और जर्नल कैसे बनेगा ये भी समझना जरूरी है। चलिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ लेसी। ओके फॉर्मेट नॉर्मल जनरल एंट्री का जो होता है वो आप बना लोगे। फॉर्मेट जो भी है नॉर्मल जनरल एंट्री का हम लोग बना लेंगे। ओके चलिए पहला हमारा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में सबसे पहले हम लीज एसेट्स और लीज लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो हमने वैल्यू निकाला था यहाँ पर कि लीज एसेट्स रिकॉग्नाइज होगा 17,25,520 में, सॉरी 820 में। तो ये रिकॉर्डिंग एंट्री हम लोग सबसे पहला यही करेंगे, ठीक है। तो लीज एसेट्स अकाउंट डेबिट to lease liability, lease assets account debit to lease liability 17,25,820। okay and narration will be being assets and liability, being assets and liability recognized। अब जो एंट्री होगा वो होगा एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। वर्किंग आपके पास है, ध्यान से देखना आप। अब जो वर्क एंट्री होगा ये फर्स्ट ईयर के एंड में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में बिगिनिंग में हमने लीज ले लिया एसेट्स को, लेकिन जो लीज रेंट का पेमेंट हो रहा है वो एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। सो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये हम लिखेंगे 1 ईयर ही, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में एसेट्स रिकॉग्नाइज हो गया,
और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में लीज रेंट पेमेंट होगा। आइए, लीज रेंट हम पेमेंट जब करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लीज रेंट जो 5 लाख है उसमें इंटरेस्ट भी है। ओके, इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर इन दिस लीज रेंट। सो आपको जर्नल एंट्री या लेजर जो भी बनाना है वो एंट्री करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग पहले ड्यू करते हैं। पहला एंट्री हम करेंगे कि लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। ये नॉर्मल एंट्री है। जब लीज रेंट लेसी पे कर रहा है तो फर्स्ट एंट्री तो यही करेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दिस इज द नॉर्मल एंट्री। whenever we are paying any rent, we are doing rent account debit to bank. Here we are writing lease rent because this is recognized as a lease rent. Narration will be being lease rent paid. Now, out of this lease rent, some amount is related to interest and some amount related to lease liability. The next entry will be to bifurcate the lease rent into finance charge यानी interest and lease liability. So we use finance charge, we do not use lease interest account. Finance charge account debit. Finance charge means interest. Next one is lease liability account debit. Finance charge will be debited with the amount of interest and the lease liability will be debited with the actual amount of repayment made during the first year. Now you come to the second working. Interest of the first year is this much and the repayment is this much. Bifurcation of this, ये इसका 2 पॉइंट हमें पता चल गया कि इसमें कितना इंटरेस्ट है और इसमें कितना लीज हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों अमाउंट वहां लिख देना है हमको। आ जाइए, इंटरेस्ट का अमाउंट आपका 2,22,393। ओके, अब प्रिंसिपल अमाउंट रिपे हुआ 2,77,607 और 2 लीज रेंट 5 लाख। नरेशन being finance charge and lease liability adjusted. Now after this, next entry will be for depreciation. In finance lease, depreciation is charged by the lessee. In finance lease, depreciation is charged by the lessee. Now charge the depreciation on assets. Depreciation account debit to lease assets. Here depreciation is as straight line method. Lease assets value is 14,85,000. sorry, ये इंटरेस्ट मैंने गलत लिख दिया क्या? इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट तो गलत लिख दिया। तुम लोग बोले नहीं कुछ, ये 2,58,000 मैं ये दूसरा लिख दिया। रे 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 रे, ये तो गलत अमाउंट आ गया।
गलत अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, सॉरी, 2,58,873 is the amount of interest, and the principal repayment is 2,41,127. अब ठीक है. Now, cost of asset is 17,25,820. This much. Divided by lease term is 5 years. Okay. The assets depreciation will be how much? Find out the amount of depreciation. The life of the asset is how much? Life of the asset is 5 years. 17,25,820 divided by 5. Depreciation is 3,45,164. Annual depreciation is this much. 3,45,164. Okay. The amount of interest is like this. Now, the last entry of the first year. Next entry in the first year is transfer the finance charge. Finance charge is treated as a revenue expenses, and depreciation is also a revenue expenses. Both will be transferred to the P&L account. P&L account debit to finance charge. $2,58,873 to lease liability 2,41,127. और ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पर दोनों. अरे क्या कर रहा हूँ मैं, डिप्रिसिएशन ना आएगा इसमें, हद तेरी है. P&L में डिप्रिसिएशन ना जाता है, हटो ना यार. तेरी के डिप्रिसिएशन ना आएगा इसमें. डिप्रिसिएशन 345,164. अब ऐड कर दो इसको, कितना बन जाएगा? 258,873 प्लस 345,164 337. ये एंट्री हो गया हमारा. लास्ट एंट्री ये बनेगा. तो इस तरह से आपको हर एक ईयर का एंट्री करना है, सेम पैटर्न में. अमाउंट खाली चेंज होगा आपका बस. ये डिप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज दोनों P&L में ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में. तो फर्स्ट ईयर में हमारा जब एंट्री हो गया, अब सेकंड ईयर में भी सेम एंट्री रिपीट करना है. अमाउंट विल चेंज ओनली. ओके. तो सेकंड ईयर में क्या एंट्री बनेगा? एंट्री आप स्टार्ट करोगे लीज रेंट से. फर्स्ट एंट्री नहीं करना आपको. फर्स्ट एंट्री यानी एसेट्स और लायबिलिटी विच वे रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्निशन एंट्री ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं करना है. वो तो रिकॉग्नाइज हो गया, एक ही बार होगा वो. बाकी सारे एंट्री आपको रिपीट करना है. लीज रेंट पेमेंट करना है, देन द लीज रेंट को जो हमने इंटरेस्ट और इसमें डिवाइड किया. तो सेकंड ईयर में क्या होगा एंट्री? सेकंड ईयर में तो फर्स्ट एंट्री इज लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख. फर्स्ट एंट्री ये हो गया आपका. उसके बाद हम लीज रेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्ज
account debit, lease liability account debit to lease rent. ओके, तो अब आप इंटरेस्ट देख लो। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था आपका? 2,22,704 इंटरेस्ट अमाउंट, एंड द रीपेमेंट इज 2,77,296। ये सेकेंड एंट्री हो गया आपका। ओके, फिर यू चार्ज द डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट to lease assets. Amount of depreciation will remain same, 3,45,164. Okay. Now again transfer the depreciation and finance charge to P&L account. Finance charge और टू डिप्रिसिएशन। तो फाइनेंस चार्ज आपका है 2,22,704 और डिप्रिसिएशन 345,164। ऐड कर दो। टोटल अमाउंट इज 5,67,868। क्लियर? समझ में आया बात? Yes, sir. Now same way you have to do the third, fourth and fifth year journal entry. हो जाएगा शिवानी? Yes, sir. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का जर्नल एंट्री बनेगा? हाँ सर, बन जाएगा। बन जाएगा। तुम्हारे पास वर्किंग किया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है, लीज लायबिलिटी कितना पे कर रहे हैं, सब चीज़ आपको वर्किंग किया हुआ है। केवल आपको अमाउंट उसी का चेंज आएगा, कोई अमाउंट इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हर साल सेम रहेगा। जो चेंजेज आएगा यहीं तो आएगा चेंज, और इसमें चेंज आएगा, बस डिप्रिसिएशन हमारा सेम रहेगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डिप्रिसिएशन एनुअली रिमेन सेम। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इसको आप सॉल्व करना। दो क्वेश्चन है, दोनों का बना लेना जर्नल एंट्री। पहला वाला एग्जाम्पल जो किए थे, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसका भी जर्नल एंट्री कर लेना। प्रैक्टिस आपको कर लोगे तो ठीक रहेगा। ओके, ये जो किए थे पहला क्वेश्चन, इसका भी वर्किंग इंटरेस्ट का भी हम लोग किए, तो इसका भी आप क्वेश्चन इसका भी बना लोगे जर्नल एंट्री। क्लियर? चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बाद में करेंगे। और 11 बजे ऑफलाइन क्लास है अकाउंट्स का। ओके, समझ गई? हाँ सर। 11:30 से। ठीक है सर।